Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well as well. So बच्चों, आज हम देखेंगे कि हम लोग किसी जगह को कैसे locate कर सकते. How do we locate places on the earth? So we all know that earth is very huge, isn't it? And there are a lot of countries, there are a lot of continents, oceans, a lot of small cities, towns. So how do we locate such things, okay, on the earth? अगर हम ऐसे ही ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, लोकेट कर पाओगे? नहीं. So that is the reason why there are certain things that are put in place for us to easily locate the place. Alright, so let's begin. But before we start, let's do a self-survey. In the picture given here, you have to mark the park and what does the blue color area show? So इस पिक्चर में आपको पार्क को मार्क करना है और ये ब्लू कलर का एरिया जो है वो क्या दिखा रहा है? What does that blue area mean is what you have to tell us. Alright, now let's begin. Maps. The word map is derived from the Latin word mappa, which means sheet or a napkin. It is so called because all the earlier maps were mostly either made or drawn on cloth, skin and parchments. If we draw the world or a part of it on a piece of paper, that drawing is called a map. Thus, a map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. So, ये map word जो है, it has been derived from the word mappa. अब mappa का meaning क्या है? Sheet या napkin. So, पुराने ज़माने में क्या करते थे? वो लोग एक मैप, अगर आपको कोई जगह की लोकेशन बतानी है तो वो एक नैपकिन पे या क्लॉथ पे ऐसे ड्रॉ करके बताते थे कि ऐसे राइट जाओ, लेफ्ट जाओ एंड देन यू विल फाइंड दैट प्लेस. सो दैट इज द रीजन व्हाई, ओके, इट वाज नेम्ड एज मैपा. ओके, from the word mappa came the word map. So पहले क्लॉथ पे या हाथ पे, स्किन पे या पार्चमेंट्स पे ड्रॉ करके बताते थे. ओके, सो अगर हमें वर्ल्ड को ड्रॉ करना है, ओके, या फिर एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी कंट्री का, या आप अपने एरिया को भी ड्रॉ करना चाहोगे तो यू विल दैट ड्रॉइंग दैट यू मेक, उसको कहलाया जाता है मैप. सो अगर आपके फ्रेंड ने आपको पूछा तुम कहाँ रहते हो, ओके, स्कूल से तुम्हारे घर का तुम बता सकते हो कैसे आना है, तो if you draw it on a paper, so you will have the directions कि go right, this is the school, you go right, then take a left, then you come out a roundabout, then take the second left. So ऐसे drawing करके बताते हैं. So that drawing is a map. So in other words, what is a map? It is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. So दूसरा क्या होता है? ग्लोब होता है. ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पे आप कंट्री को लोकेट कर सकते हो, कॉन्टिनेंट को लोकेट कर सकते हो. बट आपको अगर डिटेल में जाना है, so then you put that detailed information on a map, which is a flat surface. Okay, now let's explore. Do you know the first map book was published by Flemish map maker Mercator, okay, in the 16th century. So he called his first map book as Atlas. So Flemish map maker Mercator ने first map book publish की थी, okay, in 16th century, जिसका नाम उसने रखा था Atlas, जो हम अभी भी यूज करते हैं. The science of map making is called cartography. Ptolemy in Greek, Claudius Ptolemaeus, a Greek geographer, is known as the father of cartography. A cartographer is a person who draws maps. The first map was made in Iraq in 4300 BC. It was made on a soft clay tablet, dried and later baked. So, Ptolemy जो है एक ग्रीक जोग्राफर है, ओके, एंड उनको फादर ऑफ कार्टोग्राफी कहते हैं. और कार्टोग्राफी क्या है? कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ मैप, and a person who draws maps is known as a cartographer. First map was made in Iraq in 4300 BC
ऑन अ सॉफ्ट एक क्ले टैबलेट पे बनाया गया था, उसको ड्राई किया था, फिर उसको लेटर बेक किया गया था. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मैप. अगर हम मैप यूज करते तो उसके एडवांटेजेस क्या है? A map gives more information about the Earth's surface in a simple and graphic manner, which is very easy to understand. So, एक flat surface पे Earth surface के बारे में हमें एक simple method से या graphic manner से हमें information मिलती है through a map. आजकल तो हम लोग सारे ही map use करते हैं. Even the GPS that we use in our mobiles, okay, or on in our car screen, okay, that is a map. So it helps us. आपको आसानी से जगह मिल जाती है. It takes you till the doorstep, isn't it? Okay. A flat map can show large areas on a single piece of paper. एक single piece of paper पे एक flat map आपको बहुत सारी information दे सकता है. Alright? It is very easy to compare cities, countries and other places as they are visible at the same time. So जब आप मैप देखते हो तो मैप पे आपको सारे ही कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियन सब कुछ मिल जाता है ऑन अ फ्लैट सरफेस. whereas ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ राउंड थिंग, तो आपको ग्लोब को घुमाना पड़ता है. ओनली देन यू विल बी एबल टू सी दैट प्लेस. ओके, it is very easy to carry a map to any place as they can be folded and stored conveniently. So बच्चों, before the GPS came on the mobile, तो लोग क्या करते थे? अगर कहीं घूमने जाते थे तो वहाँ पे होटल में या किसी बुक सेलर से वो मैप लेते थे और मैप लेके फिर उसके हिसाब से उस जगह पे वो घूमने जाते थे. But now it has become more convenient because you have the map on your mobile screen. So, but still there are people who can who do refer to a map. It is more convenient. So, easy भी हो जाता है, उसको fold करके जेब में रख सकते हैं. Alright, maps generally use signs and symbols in different colors. So, different colors use होते हैं signs, symbols के लिए. This makes them more understandable. जैसे कि हॉस्पिटल हो या पोस्ट ऑफिस हो या कोई नदी आ रही हो, सो ये सारे साइंस एंड सिंबल्स यूज होते हैं. सो वेरी इजीली यू कैन recognize what is what. Maps may be drawn for a specific purpose. For example, a weather map shows only the weather conditions at a given place and time. A political map shows the boundaries of countries, states, etc. So, अलग अलग पर्पस के लिए मैप्स ड्रॉ किए जाते हैं. जैसे वेदर मैप हो गया, फिजिकल मैप हो गया, पॉलिटिकल मैप हो गया. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. Some of them are as follows: physical or relief maps. Maps showing natural features of the earth like mountains, plateaus, rivers, plains, oceans, etc. They are called physical or relief map. So जो maps होते जिन maps पे आपको mountains, plateaus और physical features दिखाई देते हैं, rivers, oceans वगैरह, वो होते हैं physical maps या फिर उसको कहा जाता है relief maps. पॉलिटिकल मैप्स पे क्या दिखता है आपको? यू सी मैप्स दैट दीज पॉलिटिकल मैप्स से शो यू सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, वेरियस कंट्रीज, स्टेट्स विद देयर बाउंड्रीज. दे आर ऑल कॉल्ड अ पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप पे आपको सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, कंट्रीज, स्टेट्स सब दिखाई देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ मैप ऑफ इंडिया शोइंग इट्स स्टेट इज अ पॉलिटिकल मैप. Thematic maps. Now, what are thematic maps? These are the maps that concentrate mainly on a special theme. For example, weather, rainfall, roads, forest, industries, etc. So, physical maps जो होते हैं वो special theme पे concentrate करते हैं. Okay? जैसे weather का हो गया, rainfall हो गया, roads, forest, etc. Alright? Now, do you know the instrument to find out direction? So direction find out करने के लिए एक instrument use किया जाता है. So ये instrument ज़्यादा करके those people who used to go on voyages, जो ship में जाते थे या aircraft में, ऐसे लोग ज़्यादा करके ये यूज़ करते. प्लस एट द सेम टाइम आपको भी अगर डायरेक्शन देखना है, आप कौन से डायरेक्शन में खड़े हो, आपके राइट में क्या है, लेफ्ट में, मतलब इट, in other words, this is an instrument that will help you to find the direction. Okay, so now let's look at the first one. It is the
magnetic compass. Now compass क्या होता है? It is used for finding the main directions. The needle of the compass always points to the north-south direction. The arrow of the needle that is pointed towards the north has a point embedded on it. This compass is mostly used by the mariners and the seamen to find directions while sailing. So ज़्यादा करके mariners जो ship में travel करते हैं, voyagers जो होते हैं, वो use करते हैं ये compass, because compass उनको direction बताता है किस direction में जा रहे हैं, because oceans are very vast. तो उसमें आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट द कंपास इजीली गाइड्स देम. ओके, सो कंपास जो होता है उसकी जो नीडल होती है, इट इज ऑलवेज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ओके, एंड द एरो ऑफ द नीडल इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ. ओके, सो इन अदर वर्ड्स compass is the best way to find a direction. Okay, so let's look at what are the essential elements on the map. Okay, so all maps, they have some common essential elements that help us to read, understand and interpret them. These elements are title, direction, scale, legends and grid. So ये मैप पे essential elements है जो हमें मैप को आसानी से पढ़ने के लिए हेल्प करते. Okay, so let's talk about the title. The title is the name of a map and generally explains its main purpose. It is generally shown in large letters as a heading on top. So title होता है मैप का नाम. Okay, and उसका main purpose होता है वो मेन पर्पस को एक्सप्लेन करता है कि कौन सा मैप है ये. ऑलराइट, और उस जनरली उसका टाइटल जो होता है वो लार्ज लेटर्स में लिखा जाता है मैप के टॉप पे. Directions, the four main compass direct points. Okay, so you have four main compass points on a map. They are also known as the cardinal points. Okay, north, south, east and west. So ये सारे directions we know about them very well. So there are intercardinal directions situated between two consecutive cardinal points, namely northeast, northwest, southeast and southwest. Directions can be identified on a map with the help of a north-south line, okay, N. An arrow with the letter N is printed in the upper right corner, or okay, upper right hand corner of the map, which points to the direction north. So, मेन कंपस पॉइंट्स तो हम सबको पता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होते हैं. ओके, उसके अंदर भी देयर आर इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस. ओके, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. और डायरेक्शंस जो होते हैं हमेशा मैप पे नॉर्थ साउथ लाइन पे होते हैं और उसको एन से इंडिकेट किया जाता है. सो एन एरो विद द लेटर एन इज प्रिंटेड इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर. जो अपर राइट हैंड कॉर्नर होता है मैप का, उस वहाँ पे ये एन लेटर प्रिंट किया जाता है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज लेजेंड और की. The legend or key explains the marks or symbols that are used in a map. There is not enough space on the map to show the actual size and shape of features like bridges, dams, forest and railway tracks. So different symbols, letters and colors are used to represent the information. So legends और key क्या होता है? ये main marks या symbols को represent करते हैं, क्योंकि draw करना आसान नहीं होता है, because it will occupy space. सो उसको फिट करने के लिए देर आर डिफरेंट सिम्बल्स यूज किए जाते हैं. जैसे ब्रिज के लिए सिंबल होता है, डैम्स के लिए होता है. सो यू कैन रीड देम इजीली बिकॉज ऑफ द सिम्बल्स. सो देर आर वेरियस सिम्बल्स, जैसे मेटल रोड हो गया, अनमेटल्ड रोड, रेलवे लाइन, एयर रूट, इंटरनेशनल बाउंड्री का सिंबल है, इंटरस्टेट बाउंड्री. देन इफ देर इज अ टाउन, अगर कोई टाउन है, ओके, हेडक्वार्टर्स ऑफ स्टेट, capital of country, dam, river, canal, tube well, coniferous forest, tea, tobacco, cotton, rubber, coal, manganese, iron and steel, shipbuilding yard, industrial area, bridge, temple, church, mosque, post office. So ये सारे अलग अलग symbols है. You have many more symbols, but these are just a few to name. Okay, so cartographers जो होते हैं, they use internationally accepted signs and symbols
कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स. जो कार्टोग्राफर्स होते हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल्स और साइंस यूज करते हैं. दैट मीन्स इट इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड और सेम होते हैं. So it becomes easier for everyone to understand it, be it in India or be it in Europe, okay, anywhere. All right. So conventional colors, they are used to show color relief features by a scheme of layer coloring. So conventional symbols के साथ conventional colors भी use किए जाते हैं. Okay. So they show color, different colors of say oceans and water bodies, which is blue. ओके, ब्लू कलर यूज किया जाता है आपको ओशियंस या वाटर बॉडीज दिखाने होंगे तो. फिर अगर प्लेन्स है तो ग्रीन कलर यूज करते हैं. सो अपलैंड्स होंगे, दे आर इन येलो कलर. सो वी ऑलरेडी सीन वाटर बॉडीज ब्लू, प्लेन्स ग्रीन. अपलैंड होगा तो येलो, माउंटेन्स का कलर होता है ब्राउन, स्नो एंड आइस, ओके, इट इज इन वाइट. एंड मैन मेड फीचर्स, ओके, जो भी मैन मेड फीचर्स होते हैं वो रेड में होते हैं. Alright, so now children, do you know in the year 1636, Gerardus Mercator, a geographer, map maker and mathematician along with Just de Hondt were the first to attempt publishing an atlas. So they were the one who first attempted on publishing an atlas, मतलब a book of map publish करने का उन्होंने first attempt किया था. Alright, now scale. What is a scale? The scale of a map is expressed as a ratio of the distance on a map between 2 points and the actual distance between the same two places on the ground. Scale is shown by drawing a graduated line on a map. For instance, if the scale of the map is 1 centimeter, 4 kilometer, and the distance between 2 points on the map is 5 centimeter, then the actual distance on the ground will be 5 multiplied by 4, that is 20 kilometer. So scale use की जाती है मैप पे. Okay, it is expressed as a ratio के तौर पे यूज किया जाता है of the distance on a map between 2 points and the actual distance. मतलब मैप के 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, okay, उसको कैलकुलेट करने के लिए in actuals the scale is used, okay, between the same two places. So because map आप अगर 100 किलोमीटर्स जा रहे हो तो 100 किलोमीटर्स वैसे दिखा नहीं सकते, इसके लिए वो सेंटीमीटर्स यूज करते हैं. तो it is generally shown by drawing a graduated line on a map. For instance, if the scale of a map is 1 centimeter, 4 kilometer, and the distance between 2 points on the map is 5 centimeter, then the actual distance on the ground will be 5 multiplied by 4. So अगर 1 centimeter का map, मतलब if the scale is on the map is at 1 centimeter, okay, that means 4 kilometer. So अगर मैप पे between 2 points it is 5 centimeter का distance है तो 5 multiplied by the 4 kilometer तो बन जाएगा 20 kilometer in the actual, on the actual ground, okay. So there are 3 types of scales shown on the map. One is the verbal scale, second is the linear scale, and the third is the representative fraction. So on the basis of the scale, maps can be categorized as small scale maps. Maps that represent large areas of the earth and show less details are called small scale maps. So maps in an atlas are of this type. In such a map, a distance of 1 centimeter may represent 5,000 kilometer on the ground, for example, on a world map. So, ये small scale maps जो होते हैं, they generally large areas को, earth के large areas को represent करते हैं, okay, and they show less details दिखाते हैं उसके बारे में, okay. So, maps in an atlas, maps जो atlas पे maps होते हैं, okay, ये generally इस type के होते हैं, इस category के होते हैं. So, इस मैप पे अगर डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का, सो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर इन रियलिटी, दैट इज ऑन द ग्राउंड, ओके. सो बाद में आते हैं लार्ज स्केल मैप. सो लार्ज स्केल मैप में दे शो अ स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ. यहाँ पे स्मॉल एरिया दिखाते हैं बट इन ग्रेट डिटेल. सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर अगर होगा मैप पे, इट विल रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर, ओके. स्मॉल स्केल पे क्या होता है कि ये लार्ज एरिया को दिखाता है विथ लेस डिटेल. लार्ज स्केल में क्या होता है, ये स्मॉल एरिया को दिखाता है विथ ग्रेटर डिटेल, ओके.
So it may be that 1 kilometer on the ground. Okay, जैसे 5000 kilometers दिखाते हैं on the small scale, यहाँ पे because it is lesser, it is showing more detail, so of a smaller area, so 1 kilometer बनता है on the ground. Okay, for example district map or a map of your city, जैसे हमारे map होता है, city का map होगा, so it will give you of the small area but it will give you in detail. Alright, now grid. What is a grid? The network of imaginary lines on the maps that intersect each other at right angles is called a grid. The lines which run horizontally are called parallels of latitude, whereas the vertical lines are called meridians or longitudes. We use a grid to help us describe the exact location of a place, direction or locate a feature on a map and on a globe. सो ग्रिड क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, ओके, एट राइट एंगल्स. राइट एंगल्स पे ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज अ ग्रिड. सो लाइंस विच रन हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जो इंटरसेक्ट करते हैं, दे आर नोन एज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, एंड दोज विच आर वर्टिकल दे आर नोन एज द मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं उनको. So we use a grid to help us describe the exact location of a place. कोई भी जगह की exact location हमें अगर describe करनी है तो हम grid use करते हैं. Okay? Now, next are sketches. A sketch is a rough diagram of an area based on memory and spot observation. It is brief, general and often inaccurate. It may not have conventional symbols. It is not drawn to scale. It cannot show distances and directions accurately, nor does it show all details. However, it is quite useful in expressing an idea in a hurry. It helps to direct a person to an unknown place and gives a general idea. So, sketches क्या होते हैं? Rough diagram होता है, जो अगर आपको किसी को बताना है, so एक rough diagram आप draw कर देते हो, so that becomes a sketch, okay, of that particular area, जैसे आपको याद है. So like for example, as I said before, if a friend of yours tells you that कि मुझे तुम्हारे घर का direction दे दो from school, so तो हम लोग क्या करते हैं, based on our memory, we'll tell the person कि okay, now from the school you exit the gate, you take the right and then you turn, take another right and then go on the left, फिर roundabout आएगा. तो ये सारा हमारा memory है, okay? So based on your memory, you are drawing a diagram. So this is sketch is based on your memory, on your observation, okay, on the spot observation that you've seen. So it is a brief, general and often inaccurate information. मतलब it is just a generic information. It may not have conventional symbols. It is not drawn to scale and it cannot show distances and directions accurately. Nor does it show all the details. However, it is quite useful in expressing an idea in a hurry. So, it helps to direct a person to an unknown place and gives a general idea. So, ये proper नहीं हो सकता है, accurate नहीं हो सकता है, but एक rough idea देने में, okay, and किसी को guide करने में काफ़ी helpful रहता है. Alright? Next is a plan. Now, a plan is a detailed drawing of the horizontal layout of a building, park, room or a small area such as market, housing complex or office which is drawn to scale. A plan is very accurate. It shows correct measurements, directions and gives an exact idea of the conditions on the ground. A plan uses a comparatively larger scale like 1 centimeter is equal to 1 meter. So, plan क्या होता है? Generally plan में it is a detailed drawing, okay, of the horizontal layout of the building, park हो, building हो, market area हो, small area हो या फिर housing complex हो. So अगर आप आपके पेरेंट्स को पूछोगे आपके घर का अगर मैप प्लान है क्या उनके पास, तो वो दिखाएंगे कि आपके घर का प्लान कैसा बना था, कि एंटर करने के बाद आपका ड्राइंग रूम आता है, फिर बेडरूम आती है, फिर किचन आता है. सो इट इज़ ऑल ड्रॉन इन अ हॉरिजॉन्टल वे एंड इट इज़ अ प्लान. अब प्लान पे प्लान जो होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है. इट शोज द करेक्ट मेजरमेंट्स, डायरेक्शंस भी करेक्टली दिखाता है
and it gives it exact idea of the condition on the ground. All right, it uses comparatively larger scale. जैसे 1 centimeter is equal to 1 meter. All right, so that's a plan. So now area covered, scale and details. So map, what is map? Map पे large area cover होता है. It is drawn on an exact and small scale and few details are shown. Sketch में it may be a small or a large area. Okay, it is not drawn to a scale, so it is just a sketch. वो scale पे draw नहीं करते, exact numbers नहीं होते. It shows only the required information. Plan is a small area like a building, park or a room, and it is drawn to exact and large scale, and it shows exact details. Alright, now let's talk about globe. हमने map के बारे में बात की है, अब हम देखते हैं globe के बारे में. Okay, since the earth is a big sphere, it is impossible to see it as a whole at a time. Man developed a small but exact model of the earth to view it as a whole. This small model of the earth is known as a globe. A globe is a true model or the miniature form of the earth. Okay, so globe जो होता है वो miniature form है earth का. Alright, now you must have seen a globe in your school. Globes are very small as compared to the earth. The earth is 30 to 40 million times bigger than the globe in your classroom. Globes come in various sizes and types. There are big globes which are difficult to carry. There are small pocket globes and there are globes like balloons that are very light, can be inflated and carried easily. The globe is a hollow sphere on which the whole world, land and ocean is depicted. You can see that a needle is fixed through the globe in a tilted manner. That is called its axis. The globe can move around the needle from west to east, which represents the earth's movement. The real earth has no needle. Okay, it moves around on its own axis, which is an imaginary line, and the 2 points on the globe through which the needle passes indicates the 2 poles. The upper point is called the North Pole and the lower point is known as the South Pole. So globe जो होता है आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा. So generally Earth तो उस globe से 30 to 40 million टाइम बड़ा है. Okay, but globes अलग अलग sizes और shapes में बनाए जाते हैं. So depending on where they are going to put it up, वो globe को design करते हैं. So अगर बड़े एरिया में उनको globe लगाना है तो बड़ा बनाएंगे. आपका स्कूल छोटा है तो इसके लिए छोटा ग्लोब बनाते हैं. ओके, अब ऐसे भी बलून्स होते, ऐसे भी ग्लोब्स होते जो स्मॉल होते, छोटे होते, एंड ऐसे भी होते जो बलून के शेप में होते हैं. तो इट कैन बी डिफ्लेटेड ऑल्सो एंड इन्फ्लेटेड ऑल्सो एंड इट कैन बी कैरीड ईजीली. सो ग्लोब जो है वो एक हॉलो स्फीयर है. सो अंदर कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट अ हॉलो थिंग. ओके, ऑन विच द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है. लैंड, ओशन, एवरीथिंग दैट इज देयर ऑन द लैंड एज वेल एज इन द ओशन. ओके, सो इसके बीच में देयर इज अ नीडल दैट इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब, एंड वो ग्लोब जो होता है वो थोड़ा टिल्टेड मैनर में होता है. सो ये जो होता है इसको कहा जाता है एक्सिस. सो दैट इज द एक्सिस. द ग्लोब कैन मूव from the needle. So needle से globe move किया जा सकता है in the direction from west to east, which represents the earth's movement. So west to east से ये move होता है जो earth का movement दिखाता है. Alright, so the real earth में ऐसा कोई needle नहीं है. Okay, and it moves, the real earth moves around its own axis, okay, which is an imaginary line. The 2 points on the globe through which the needle passes indicate the 2 poles. So, 2 poles को represent करते हैं that point through which the needle passes. One is the North Pole and the other one is the South Pole. Alright, now let's talk about latitudes. A latitude is the angular distance of a point on the Earth's surface measured in degrees from an imaginary line named the equator, which lies midway between the poles. So, ये equator के midway पे होता है. Alright, so latitude क्या होता है? It's the angular distance of the pole.
okay, on the earth's surface, which is measured in degrees from an imaginary line. So imaginary line कौन सी है? तो equator है जो दोनों poles के बीच में आती है. Alright, now these lines, they are termed as the latitudes and longitudes respectively. Latitudes and longitudes intersect each other on the globe and form a grid system. So the grid lines, latitudes and longitudes are a set of lines used to find the exact location of a place on a globe or a map. So अगर आप देखोगे तो latitudes क्या होती है? तो horizontal lines होती है on the globe and longitudes होती है vertical lines. और ये दोनों लाइंस राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको वो प्लेस जो है मैप पे कौन सी प्लेस है वो समझ में आती है. ओके, नाउ द ग्रिड लाइंस, दैट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, दे आर अ सेट ऑफ लाइंस, ओके, जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द ग्लोब ऑफ अ मैप बताने में काम आते हैं. ऑलराइट, नाउ डू यू नो the latitudes are parallel to each other. So ये parallels होते हैं, parallels, एक के नीचे एक at the same distance आते हैं. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. So ये सारे जो equator से ऊपर नीचे जाते हैं poles तक, तो वो कहलाए जाते हैं parallels of latitudes. Now ये जो होते हैं ये imaginary lines है जो east से west direction में they run, okay, and they are used to measure the distance. The distance between the two parallels of latitude is assumed to be 1 degree, that is equal to 111 kilometer. The equator is the most significant latitude. It was chosen as the reference line because it divides the globe into two equal parts. The northern half of the globe is known as the northern hemisphere, and the southern half is known as the southern hemisphere. The equator represents the 0 degree latitude. It is the largest latitude. So equator जो है, it is the most significant latitude जो बीच में आता है, okay, and it was chosen as the reference line. जो equator होता है वो reference line है because ये globe को दो हिस्सों में बांट देते हैं, okay. So northern half जो है, ओके, नॉर्थ वाला जो हिस्सा है उसको कहलाया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ वाला, नीचे वाला, इक्वेटर के नीचे वाला जो हिस्सा है वो बन जाता है सदर्न हेमिस्फीयर, ओके. एंड इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, ओके, जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, ओके. नाउ ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर नोन एज द नॉर्थ लैटिट्यूड्स. Similarly, all parallels to the south of the equator are called south latitudes. Since the distance from the equator to the north or south pole is 1/4 of a circle round the earth, it measures 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. So, distance जो होता है equator का to the north and south, okay, वो 1/4 होता है circle के around the earth, and इसके लिए 1/4 of 360 डिग्री, तो पूरा अर्थ जो है वो 360 डिग्री का है, ऑलराइट. एंड जो डिस्टेंसेस होते हैं 1/4 में कैलकुलेट किए जाते हैं, दैट इज 90 डिग्रीज पे. सो 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके, मार्क्स द नॉर्थ पोल, एंड 90 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड क्या होता है? इट मार्क्स द साउथ पोल. द अल्फाबेट N is used to indicate the north latitudes and S to show the south latitudes. Each parallel of latitudes is a circle. All parallels of latitudes are not equal in length. So all सारे parallels जो होते हैं latitudes के equal length पे नहीं है, okay, उनका length जो है it decreases as one moves from northwards from or southward. So आप देखोगे कि equator पर तो पूरा circle है, उसका distance धीरे धीरे कम होता जाता है as you go down or as you go up. Okay, so that is why they are not in equal length. All right, now distance between any two parallels of latitudes is always equal. So distance equal होता है but उनका length जो होता है वो equal नहीं होता. All right, now some important latitudes. The equator represents 0 degree latitude. अब इसमें आते हैं Tropic of Cancer. So Tropic of Cancer कहाँ है? 23.5 degree, okay, north latitude में.
नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इट इज एट 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, ओके, इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और उसको कहलाया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. आर्कटिक सर्कल कहाँ पे, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड इट इज नोन एज द आर्कटिक सर्कल. Whereas अंटार्कटिक सर्कल जो होता है वो होता है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में सदर्न हेमिस्फीयर, and that is the reason why it is known as the Antarctic Circle. So Arctic Circle, so Arctic Ocean जो है it is towards the north of the earth, and that is why that circle, that area in which that Arctic Ocean lies, that is it is at 66.5 degree north latitude. Okay, and that is the reason why that area is known as the Arctic Circle. Similarly, the Antarctic Ocean, okay, it is towards the bottom, or that is towards the south. Okay, it is in the southern hemisphere, and that is the reason why that area is known as the Antarctic Circle. Now, these important latitudes, they divide the earth into various heat zones. So, इनकी वजह से अलग-अलग heat zones को में earth को divide किया जाता है. So North Pole जो है it is 90 degrees in the northern hemisphere, and that's the reason why it is known as the North Pole, and South Pole is at 90 degrees in the southern hemisphere, and that's why it's known as the South Pole. Alright, now let's look at the climatic or heat zones of the earth. All parts of the earth do not receive equal amount of heat from the sun, thus they have different types of climate. On the basis of above mentioned important latitudes, the whole earth is divided into 3 heat zone. So जो भी हमने latitudes देखे उसके basis पे earth को 3 heat zones में divide किया जाता है. Okay, because earth के हर हिस्से को equal amount of heat नहीं मिलती from the sun. Okay, and that is the reason why the climate is different. So torrid zone जो होता है, torrid means hot. It is the hottest region of the earth. It lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn in both the hemisphere. So अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये torrid zone जो होता है, it is between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn in both the hemisphere, and that is the reason why it is the hottest zone. Okay, then the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes of this region, so it receives maximum heat. Now you have to try this, okay, to find out in which heat zone do you live. आप कौन से heat zone में रहते हैं वो आपको find out करना है. Okay, then comes the temperate zone. So temperate zone lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere. So अगर आप इस globe को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि temperate zone कौन सा है. तो temperate zone कहाँ पे आता है? वो आता है, it is comes between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere. Similarly, Tropic of Capricorn and between the Antarctic Circle in the southern hemisphere. Now, यहाँ पे जो midday sun है, it never shines overhead on any latitude of this region, but it experiences slanting rays of sun throughout the year. So, this is because the angle of sun's rays goes on decreasing towards the poles. Now, these regions, they have moderate temperature. So, यहाँ पे जो है इस एरिया का टेम्परेचर जो होता है वो होता है मॉडरेट. जैसे टॉरिड में होता है गरम, ओके, यहाँ पे होता है मॉडरेट. इट्स नॉट नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. फिर आता है फ्रिजिड जोन. नाउ दिस जोन इट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. Now, in these areas, the sun does not rise much above the horizon, and the sun's rays are very slanting. So, these regions, they are very cold. So, these are the coldest regions of the Earth's surface. So, frigid zone जो है Arctic Circle में आता है,
Okay, it comes between the Arctic Circle and the North Pole, Northern Hemisphere में, and Antarctic Circle and South Pole in the Southern Hemisphere. And यहाँ पे the sun does not rise much above the horizon and the rays are also very slanting. And इसकी वजह से ये areas जो होते हैं वो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है. Okay, and they are the coldest regions. Now let's talk about the longitudes. The imaginary semicircular lines running from the North Pole to the South Pole are called the longitudes. So longitudes जो होते हैं वो ऊपर से नीचे आती है. Okay, so these are the semicircular lines. They are running from the North Pole to the South Pole, and they are also known as the meridians of longitudes. पहले क्या था? Parallels of latitudes. अब ये होता है meridians of longitudes. Unlike the latitudes, all meridians they are of equal length. Okay, so latitudes जो होते हैं वो equal length के नहीं थे. Distance was equal but length was not equal. But these are of equal length. So any meridian could have been taken for the numbering of longitudes. It was finally decided in 1884 by an international agreement to choose the meridian to begin counting, which passes through the British Royal Astronomical Observatory at Greenwich, okay, which is near London. So this meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude. From this we could count 180 degree eastward and 180 degree westward. So actually उसका length तो equal था, but फिर भी they wanted one point from which it could be counted, and that is the reason why उन्होंने choose किया this place called Greenwich. Okay, Greenwich में है British Royal Astronomical Observatory. Okay, Greenwich is situated near London. So this place became the actual point. From that point was known as the prime meridian, जहाँ से आप वो बन जाता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में. सो वहाँ से आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना शुरू कर देते. ओके, फ्रॉम दिस वी कुड काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री westward. Okay, now do you know the distance between two meridians is measured in degrees. The degrees are further divided into minutes and minutes into seconds. There are 360 degrees of meridians of longitude, 180 degree in the east and 180 degree in the west. The longitudes, they are semicircles. They are equal in length but not parallel. So equal length में होते हैं but वो parallel नहीं होते एक दूसरे के. Okay, and the distance between the two meridians वो भी degrees में count किया जाता है. फिर degrees are then broken into minutes and minutes into seconds. Now there are 360 degrees of meridians of longitude. 180 degree east में आया, 180 degree is in the west. They are all semicircles and they are equal in length but not in parallels. The distance between any two meridians of longitudes is not the same. It decreases steadily polewards and ultimately becomes 0 at the poles where all the meridians meet. The prime meridian divides the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. The alphabet E is used to indicate the eastern longitude and W is used for western longitude. 180 degree east and 180 degree west meridians of longitudes are on the same line. So the distance जो होता है meridians के बीच वाला of longitudes, it's not the same. Distance अलग होता है. जैसे parallels में distance same होता है, okay? Latitudes में यहाँ पे distance same नहीं होता. वो decrease कर जाता है. Okay, it starts getting decreasing पोलवर्ड्स. जैसे जैसे आप पोल्स के पास जाते हो वो डिक्रीज होता है एंड अल्टीमेटली आप जब पोल पे पहुंच जाते हो तो वो 0 बन जाता है. ओके, वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट. नाउ द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स. ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उसको डिवाइड किया जाता है. ई for eastern longitudes and W for western longitudes. These are the indicating points. Okay. 180 degree east and 180 degree west meridians of longitudes are on the same line. Now, longitude and time. The sun is the best timekeeper throughout the world. So,
Time is measured on the basis of relationship between the sun and the movement of earth. Since the earth takes 24 hours to complete one rotation, it passes through 15 in 1 hour, okay, or 1 degree in 4 minutes. The earth rotates from west to east, so every 15 degrees we go eastwards. Local time is advanced by 1 hour, and if we go westward, local time is retarded by 1 hour. In this way, we can conclude that the places east of the Greenwich meridian face the sun earlier and gain time, whereas the places lying to the west of the Greenwich meridian see the sun later and lose time. So, अगर आपने देखा होगा कि कोई कंट्रीज जो है, ओके, अगर हमारे यहाँ पे 10 बज गए तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि लंदन में कितने बजे होंगे, ओके, या फिर यूएस में कितने बजे होंगे, ओके. सो दैट डिफर्स. सिमिलरली वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट कि अगर इंडिया में 10 बजे तो यूके तो ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम होगा या सिंगापुर में क्या टाइम होगा, क्योंकि बेसिकली जैसे जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सो सपोज द प्लेस, ओके, फ्रॉम वेयर द सन राइजेस, तो वहाँ पे आपको 0 डिग्रीज पे कैलकुलेट किया जाता है. सो सन जो होता है, इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो हमारा भी टाइम जो होता है, डे एंड यू नो आवर डे बिगिन्स विद द सन राइजिंग एंड डे एंड्स विद द सन सेटिंग. सो टाइम जो होता है वो भी सन के मूवमेंट के हिसाब से अर्थ पे कैलकुलेट किया जाता है. तो अर्थ को 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए. सो तभी वो इट पासिस थ्रू 15 डिग्रीज, सो इन 1 आवर, ओके. सो इट पासिस थ्रू 15 रोटेशंस इन 1 आवर. 15 रोटेशंस कंप्लीट होते हैं 1 घंटे में, और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स. अर्थ जो है इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो उसका डायरेक्शन जो होता है ये वेस्ट से होता है टूवर्ड्स द ईस्ट, ओके. सो एवरी 15 डिग्रीज वी गो ईस्टवर्ड. सो हर 15-15 डिग्री पे हम ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ते रहते हैं. ऑलराइट. सो लोकल टाइम जो है वो एडवांस हो जाता है बाय 1 आवर, ओके. सो फॉर 1 डिग्री इट टेक्स 4 मिनट्स. So for 15 degrees, okay, you have to do 15 multiplied by 4, that is 60 minutes मतलब 1 hour. So वैसे 1 hour से वो advanced होते रहते हैं, okay. And जब हम westward जाते हैं, so local time is retarded by 1 hour, okay. In this way, we can say that the places east of the Greenwich meridian face the sun earlier, okay, and gain time, whereas the places lying to the west, ओके, ग्रीनविच मेरिडियन के जो वेस्ट में आते हैं, ओके, दे सी द सन लेटर एंड दे लूज टाइम. सो इसकी वजह से जब हम कैलकुलेट करते हैं, इफ़ यू वांट टू नो द टाइम ऑफ लंदन, ओके, सो हम माइनस करते हैं. एंड अगर हमें टाइम देखना है टुवर्ड्स द दिस थिंग, टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट एरिया, सो हम ऐड करते हैं. सो वो हमसे आगे है और यूके साइड हमसे पीछे है, ओके. सो लोकल टाइम एट न्यूयॉर्क अगर 7:40 है, सो इट इज़ 4 hours 56 minutes behind, ओके. सो लेट्स लुक एट द लोकल टाइम एट लंदन. अगर लंदन में 12 बज गए, ओके, सो द लोकल टाइम एट न्यूयॉर्क वुड बी 7:40 AM, that is 4 hours 56 minutes behind. Local time at India is 5:30 PM, so 5.5 hours ahead, okay. So Greenwich जो है 0 डिग्री मेरिडियन पे है, ग्रीनविच मेरिडियन है. So local time going towards westward, तो हम वो हो जाएगा पीछे, and so that is the reason why it loses time. So local time is behind, and India towards east, okay, it will gain time. So it will be plus, okay. So if for example अगर हमारे यहाँ पे 10 बज गए, so इंडिया में if it is 10 o'clock, so you have to go 5.5 hours behind for London, ठीक है. so फिर आपको टाइम मिल जाएगा कि लंदन में कितने बजे, and then further you go 4 hours 50 minutes or 56 minutes to find out what is the time in US, okay. So now let's see how do we calculate the local time.
The places situated on the same longitude will have the same time, which is called the local time of all the places. Local time is calculated by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. For example, when the prime meridian has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday. That is, all the places on a given meridian or a longitude have the same local time. So, places जो situated है, अगर there are places जो same longitude पे situated है, okay, they will have the same time, which is called the local time of that place. Local time is calculated by the shadow. So, sun के shadow, okay, के हिसाब से local time calculate किया जाता है. So, shadow जो होती है, जैसे कि हमें पता है कि shadow in the morning, okay, it is a little longer. Afternoon में it is shortest, and again towards the evening it is longer, it grows up. So, noon is the shortest time, longest at sunrise and sunset. That's how the shadow is cast, and that helps us to find the time. For example, when the prime meridian has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have midday. So, जब highest point पे होता है sky पे, that means it is the shadow is shortest, okay, and तभी होगा midday. That's the noon time. That is, all the places on a given longitude, meridian of longitude will have the same local time. As the earth keeps rotating, the places at different longitudes have different time. The earth rotates from west to east. So, the people in the east, जो east में रहते हैं, वो पहले sun को देखते हैं. Okay, they see the sun earlier. As the earth rotates slowly, it takes 4 minutes to pass 1 degree of the meridian. So, it takes 24 hours to complete one rotation, which is 360 degrees. So, in 24 hours, the earth rotates 360 degrees. So, therefore, in 1 hour, earth का rotation कितना होगा? 360 degree divided by 24 hours. So, it will be 15 degrees in 1 hour. Okay. So, the earth rotates 15 degrees in 1 hour, that is in 60 minutes. The time taken to pass 1 degree will be 60 degrees divided by 15, that means 4 minutes. Okay. So, thus the earth rotates 1 degree in 4 minutes. Clear? Now, since the earth takes 4 minutes to pass from one meridian to the other, it takes 24 hours or 1440 minutes to complete one rotation. Okay. So, ये है calculation of the entire rotation of the earth. So, what is Indian Standard Time? अब Indian Standard Time क्या होता है? IST क्या होता है? India lies between 68 degrees 7 east, okay, and 97 degrees 25 east longitude. So, there are 29 longitudes that lie between the east and the west. So, we know that the time changes with every longitude. So, इंडिया का जो डायरेक्शन है, अगर आप देखोगे on the map it is 68 degrees 7 east, okay, and 97 degrees 25 east. So, on the longitudes. So, there are कितने longitudes हो गए यहाँ पे? 29 longitudes are there between east and west. So, we know that the time changes with every longitude. हर longitude के साथ time change होता रहता है. Okay. So, if we calculate time from the prime meridian, then India would have 29 different timings. So, अगर हम prime meridian से calculate करेंगे, तो India में अलग-अलग 29 time zones हो जाएंगे. Okay. This would lead to utter confusion and chaos, जिसकी वजह से बहुत confusion हो जाएगी, क्योंकि आप सोचो कि अगर हमारे पास 29 डिफरेंट टाइमिंग्स होंगे तो क्या होगा. सो जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हो तो मुंबई का टाइम अलग हो जाएगा, से गुजरात का टाइम अलग हो जाएगा, राजस्थान का. सो इट विल बी टू मच. ओके. सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन,
okay, it was necessary to adopt the local time of some central meridian of the country as the standard time for the whole country. So उसकी वजह से उनको जब कैलकुलेट करने के लिए, लोकल टाइम कैलकुलेट करने के लिए, सो व्हाट वाज डिसाइडेड वाज टू टेक अ सेंट्रल पॉइंट, ओके, and to calculate the time for the entire country which will be followed. So what they did was they used 82.5 degrees east, okay, or 82 degrees 30 east, okay, through मिर्ज़ापुर, जहाँ पे प्रयागराज है, नियर प्रयागराज, ओके, प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था. That was taken as a standard meridian, okay, and then local time, वहाँ पे जो local time होगा, okay, that prevails on that longitude will be the time which will be calculated for the whole country. तो पूरा देश उस time को follow करेगा, okay, and that is the reason why that time became the Indian Standard Time. Clear? Okay, चलो आप देखते हैं. Do you know what do you mean by AM and PM? So हम जब when we talk about time, हम बोलते हैं ना आप it's 10 AM या 10 PM. So what is that time? What is that AM and PM? So AM, it stands for anti-meridian. So anti-meridian में होता है the time before, दोपहर के 12 बजे से पहले जो time होता है, it is anti-meridian, okay. Anti means before and meridian means sun position at noon. Thus the time after midnight and before noon is known as AM, okay. For example, 6 o'clock in the morning is also written as 6 AM. So midnight से noon तक, okay, वो time होता है anti meridian, AM. PM, it stands for post meridian, मतलब after midday or noon till midnight, okay. Thus the time after noon and before midnight is followed by PM. For example, 5 o'clock in the evening is expressed as 5 PM. Clear? Now, let's talk about time zones. Like India, most countries of the world adopt their standard time for the central meridian of their countries. In this way, the whole world is divided into 24 standard time zones, each of which differs from the next by 15 degrees in longitude or 1 hour in time. But the large countries like USA, Canada and Russia, which have a great east-west stretch, have to adopt several time zones. Russia extends through almost 165 degrees of longitude and is divided into 11 time zones. That is, in Russia there are 11 standard time. Both Canada and USA, they have 5 time zones. So, India में एक ही time zone use किया है उन्होंने, which is the standard time zone, okay, from the central meridian. So in this way, whole world जो है, पूरा देश जो, पूरी दुनिया जो है 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइड की गई है, ओके. और ये सारे टाइम जोन्स 15 डिग्रीज के कैलकुलेशन के हिसाब से इन लॉन्गिट्यूड और 1 आवर इन टाइम के हिसाब से दे आर डिवाइडेड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन. बट जो बड़े बड़े देश है, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, दे आर वेरी बिग, तो उनका ईस्ट टू वेस्ट का स्ट्रेच जो है वो काफ़ी डिस्टेंस वाइज काफ़ी बड़ा है, ओके. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई उनको अलग अलग टाइम जोन्स को एक्सेप्ट करना पड़ा. सो रशिया में, रशिया इज एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 165 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड इसकी रशिया 11 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है. यूएसए एंड कनाडा उसके 5 अलग टाइम जोन्स है. ऑलराइट, सो नाउ let's talk about the concept of map, locating places on earth. It is more of a differentiate between this maps and the globes. So map, it is a flat representation of the earth's surface. So flat surface पे earth का, we represent the earth on a flat surface by using a map. Types of maps are political, physical and thematic. Components क्या होते हैं? Direction, title, legend, scale. Sketch, it is a rough drawing of an area, but plan is a detailed drawing which is drawn to scale.
Alright, what is a globe? Globe पे होते हैं latitudes and longitudes. Okay, latitudes, they are the horizontal lines which are parallel to each other. There are 180 parallels of latitude. Latitudes divide the earth into 3 heat zones. Torrid, which is extremely hot. Temperate, जहाँ पे moderate temperature होता है, and frigid is the cold zone. Okay. Longitudes, they are the vertical circular lines. And there are 360 degrees of meridians of longitudes. Longitudes, they help us to locate places on the earth and also determine the time in different areas. Alright, now let's look at the new words that we've come across in this chapter. Glossary. Map. What is a map? It is a drawing of the world or a part of it on a piece of paper. Okay. Atlas, it's a book of maps. Okay. It contains various maps. Scale. Scale क्या होता है? A ratio between the distance shown on the map and the actual distance on the ground. So, map का distance and actual distance का जो ratio होता है, okay, that is the scale. Conventional signs, they are symbols that are used all over the world, okay, in various maps to show different features. So, mountains हो गए, valleys हो गए, rivers हो गए, they are all conventional signs. Sketch is a rough drawing based on memory without the use of a scale. Plan, a drawing of a small area on a large scale. Globe, it's a true model of the earth. मतलब जैसे earth है वैसे ही उसका replica बनाया जाता है, which is known as the globe. Latitudes, they are a latitude is the angular distance of a point on the earth's surface measured in degrees from the equator. Longitudes, they are imaginary semicircular lines running from north to the south, okay, poles. Grid, it is the latitudes and longitudes intersecting each other, okay, on the globe. So, where they intersect, that point is known as the grid, okay. Equator is the imaginary line that divides the earth into 2 equal halves. Alright, now it's time to do the exercise. Alright, darken the correct circle in the OMR sheet. So, OMR sheet पे आपको darken करना है correct circle को. The dash map shows the physical features of the earth. So, physical features are shown on the physical map. Alright, dash is the name of a map and generally explains its purpose. Title. There are dash latitudes on the globe. On the globe, how many latitudes are there? There are 180 latitudes. Okay, the dash zone is the coldest zone, frigid zone. Longitude of prime meridian lies at 0 degrees. Okay, now fill in the blanks. The representation of the earth on a flat surface is called map. Dash map show mainly special theme, those are the thematic maps. There are 4 cardinal points, that is north, south, east and west. Okay, a sketch is a rough diagram of an area based on memory. Okay, the dash is the hottest zone of the earth, that is the torrid zone. Alright, now political maps show the plateaus, plains and rivers, true or false? It is false. Okay, they show towns, cities, countries and all. Plan is a detailed drawing which is drawn to scale. It is true. Okay, latitudes are of equal length, that is false. They are of equal distance. Okay, longitudes are semicircles, true. And maps help to locate time in different areas, false. They don't help us to locate the time in different areas, but the where they are located, the areas where they are located, that is what is told. Okay, now match the following. Antarctic Circle is in the south. Okay, so it is at 66.5 degrees south. South Pole, okay, it is at 90 degrees south. Equator, 0 degrees latitude. Arctic Circle, it is at 66.5 degrees north, and Tropic of Cancer is at 23.5 degrees north. Alright, now short answer type question, you need to reread the chapter and write the answers in short. Okay, short में answers लिखने इन सारे questions के, आपको detail information नहीं लिखने.
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड गिव डिटेल्ड आंसर्स, ऑलराइट। गिव रीजंस में आपको रीजन देना है कि ऐसा क्यों है, ओके, व्हाई द लैटिट्यूड्स आर नॉट ऑफ एन इक्वल लेंथ, ओके, एंड व्हाई मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब। आपको इनके रीजंस देने, यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स इन द चैप्टर इटसेल्फ इफ यू रीड द चैप्टर नाइसली, ओके। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, सो ये रीजंस देने, आपको रीजन बेस्ड रीजनिंग के हिसाब से ये क्वेश्चन से। एक होता है assertion, that is a sketch is a rough drawing of a place or an area and reason it is drawn to scale. तो इसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने, alright. Then source based question में आपको ये it is just like a comprehension, तो comprehension के जैसा एक passage दिया गया है आपको, and based on that you have to read the passage and then answer the questions that follow. जैसे आप इंग्लिश में comprehension में करते हो तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको पैसेज दिया गया है एंड आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने, ऑलराइट। एनहांसिंग स्किल्स में देयर इज ब्रेन बॉगलर्स, दैट इज हॉट्स, तो यहाँ पे यू हैव टू यूज योर ओन थिंकिंग, ओके, एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, ओके। पिक्चर स्टडी, the picture alongside it shows some of the conventional symbols. So in pictures के basis पे आपको questions दिए गए जिनके जवाब आपको लिखने हैं, alright. फिर activity में आपको unscramble करना है इन words को ताकि आपको इन questions के जवाब मिले, alright. जैसे different features of the earth marked on map. So ये different features क्या है, okay. So if you unscramble this word, you will get the answer, alright. So likewise you have to do for all of them, that is the legends is the first answer, the rest of them you can do it by yourself, alright. Skill development activities, so this is going to be a development activity for you, okay. Cross connect, so you have to now calculate the times of the different zones, okay, keeping everything in mind that we have gone through in this chapter. Map skills, okay, on an outline map of India you have to mark the following. So map पे आपको ये जो questions दिए गए उनको उनके answers mark करने. Project, you have different types of project that you need to make, okay. In your notebook you have to draw the sketch of your locality. आपके लोकेलिटी का स्केच बनाना है, अप्रोप्रिएट साइंस देने हैं, सिंबल्स देने हैं एंड प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स एंड आपके घर का डायरेक्शंस देने हैं, आपके घर के डायरेक्शंस देने हैं. यू हैव टू ऑब्जर्व डिफरेंट मैप्स इन योर स्कूल एटलस. उसके बाद में आपको थीमेटिक मैप्स की एक लिस्ट बनानी है, ओके, जो एटलस में दिए गए, ऑलराइट. फिर देन यू हैव टू ड्रॉ डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन मैप्स ऑन अ चार्ट पेपर and use colors wherever you need them, and also briefly write how symbols help in reading maps. Display this in the chart, okay. Life skills में you have to draw a sketch of your neighborhood, show your house, your neighboring houses, park, market, सारा आपका जो neighborhood है वो बनाना है. conventional symbols use कर सकते हो, legends use कर सकते हो, okay, and आपको ये notebook पे बनाना है. फिर you spot a foreign traveler stranded at the airport. So he wants to visit the tourist spot, okay, in your city. So आप उसको कैसे डायरेक्ट करोगे, okay, इसके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आप कैसे हेल्प करोगे. So you have to talk about that and you can use various landmarks and symbols also, alright. So children, all these activities will help you understand this chapter better. But this chapter, in order to understand it better, you know what you have to do. आपको सबसे पहले तो चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, ओके. यू हैव टू फिनिश ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखो अच्छे से, सो दैट आपने जो भी रीड किया है, मैंने जो भी समझाया है, आपको अच्छे से समझ जाएगा, ओके. एंड देन गेट ऑन टू ऑल द एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा skills that you have to enhance of yours. All right, children, get going.